सो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वेरी कॉमन टाइप ऑफ डिकोडर, 2 line to 4 line decoder. As the name suggests, there are a number of inputs 2, and we will designate these number of 2 inputs as I1 and I0. And number of outputs 2 raised to power n means 2 raised to power 2, 4. So this will be AO3, O2, O1 and O0. These are 4 outputs and 1 enable signal. So this is E. So these are the primary requirements for designing any type of decoder, that how much number of inputs, how much number of outputs, and obviously 1 enable signal. So we will term it as a first point. Now the second point is its block diagram. So block diagram, we understand that there are, this is 2 to 4 decoder. Two number of inputs. So I node, I1, these are inputs, and 4 outputs. So 4 outputs, we could say that this is, suppose I3, O3, O2, O1 and O0. So these are number of outputs, and this is 1 enable signal. So the order may differ. This is your choice. Either you could write it as O node, O1, O2, O3, or any of the order actually. So this is a block diagram, the second point is. And now the third point is it's a truth table. So truth table. As for truth table is concerned, we got 2 inputs, I node, I1, and 4 outputs, O3, O2, O1 and O dot, and obviously we also require 1 enable signal. So these are inputs, these 2, these are 4 outputs, and this is enable. Okay, and when enable is 0, it means whatsoever the value of I1 and I dot, don't cares, all the outputs will be 0. And when E is equal to 1, then if the combination is 0 1, so first of all write the combination 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Okay, then for all these inputs E should be equal to 1. Now when 0 0, it means O node, this will be active high and others are zeros. For this 1, this also 2. So these are the outputs. So this is the truth table. Okay, and as we told you that when E is equal to 0, when E is equal to 0, all the outputs are equal to 0, are equal to 0. This condition particularly, this one, when E is equal to 0, all the outputs are equal to 0. Now we need to require that Boolean expressions. अगला हमारा यही हमने पॉइंट्स रखे हुए कि फर्स्ट उसका डेफिनेशन पॉइंट, या व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, or the definition part that we discussed in the previous lectures.
then block diagram, then truth table, then Boolean expressions. So we can write the Boolean expressions for O3, O2, O1 and O dot. So for all these we know that E is equal to 1. So there is no problem for E. E is always equal to 1. But now we need to see about the combination of the inputs. For O node, for O3 first write 1 1. It means it is I1 I dot, and for O2 I1 I dot complement, and next I1 complement and I dot, and for O node both are zeros, so I1 complement and I dot complement. So these are 4 product terms. Okay, so there are 4 product terms, and the final point is about its circuit diagram. So circuit diagram we are going to implement. We can say that we are implement these 4 product terms, these 4 product terms using AND gates. तो हम AND gates का यूज कर रहे हैं. तो हमें 4 AND gates चाहिए क्योंकि हमारे पास 4 बूलियन एक्सप्रेशंस हैं. तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम्स हैं. हमने 4 AND gates ले लिए हुए हैं. 2 हमारे पास इनपुट्स हैं I1 एंड I नोड. ये इनेबल है, जिसको एक्टिव हाई है तो हमने इसकी वैल्यू को 1 रखा हुआ है, क्योंकि 0 पे तो ये काम ही नहीं करेगा. तो O3 के लिए देखिए हमारे पास I1 और I नोड डायरेक्ट है, तो ये I1 और ये I डॉट, तो हम इसको डायरेक्ट ही दे देंगे इसको. सेकंड के लिए O3 के O2 I1 डायरेक्ट, सो I1 this goes direct, and I dot complement, so this is I dot complement, so this is I dot complement. O1 I1 complement, so this is I1 complement, this is I1, and I dot without complement, this is I dot without complement. And finally for O node, both complemented, so this is I1 and this is a I dot. So this is the way how we can realize the circuit diagram of decoder using AND gates. We can also implement decoder using NAND gates. So for NAND gates, what can be the difference? Actually, I would show you that first of all, if we need to realize this using suppose NAND gates, so what the changes we could see? First of all, see the truth table. For E, I1, I node, O3, O2, O1 and O dot, these are the inputs and these are the outputs. So the changes that we can make is that first thing is that now we can E is equal to 1, all equal to 1, and for 0 1 0 0 sorry 0 0 0 1 1 0 1 1, we are taking it as a 0. And keep in mind that if we are making use of NAND gates, then the outputs will be at active, not low, sorry, not high. Now this time low, because in this
for using AND gates. We also showed you that the only one of the outputs will be at active high 1 1 1 1. But in this case the outputs will be at active low. तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन E इज इक्वल टू 1 के लिए बन गया. अब जैसे कि 0 0 था, 0 0 के लिए कौन एक्टिवेट हो रहा था? O नोड. तो O नोड की वैल्यू 0 होगी और बाकी सबके लिए वैल्यू 1 हो जाएगी. फिर 0 1 के लिए ये, तो ये सारे 1s हो जाएंगे. अगले केस के लिए 2, तो ये वाले हो जाएंगे. ये 3, तो इसका मतलब ये वाला 0. इसका मतलब ओनली एंड ओनली वन ऑफ दीज आउटपुट्स विल बी एट एक्टिव लो instead of active high. So this is the first change you could draw. Now the second change is after the truth table. The second change you can see is the fifth point, that is it's a circuit diagram. सर्किट डायग्राम में क्या चेंजेस आएगा? ये जो हमने पुराना सर्किट डायग्राम बनाया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे भी हम एंड गेट ले रहे हैं उसके साथ हम इन्वर्टर ले लेंगे. जैसे मान लो कि पहले वो O3 आउटपुट आ रही थी, ये देखिए ये O3 आ रही थी, अब O3 का कॉम्प्लीमेंट आएगी. मतलब कि एक आउटपुट ही जो है वो एक्टिव लो पे आएगी, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस वैसे ही चलेंगे. और दूसरी बात है कि इनेबल का मैं एक बता रहा हूं, यहाँ पे हम इनेबल की वैल्यू को, क्योंकि हम इसको भी एक्टिव लो पे ले रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ से वैल्यू अगर 1 भेज रहे थे, तो हम यहाँ से अब क्या लगा देंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे, तो वो 0 पे वो एक्टिवेट हो जाएगा वो. तो एक चेंजेस ये आ गई. अब O3, जैसे कि O3 के लिए क्या कॉम्बिनेशन था, I1 और I डॉट. सपोज I1 और I डॉट, I1 और मान लो I डॉट. तो I1 की वैल्यू क्या थी, 1, और ये वैल्यू भी क्या थी, 1. तो क्या जाएगा, यहां से भी 1 जाएगा, यहां से भी 1 जाएगा, यहां से भी, क्योंकि ये हमने जब इन्वर्टर होके इनेबल 0 भेजा था हमने, तो 0 जाएगा, तब यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो यहां से आउटपुट क्या निकलेगी, 0. तो एक्टिव लो. इस केस में क्या था इस केस में हमारे पास 1, देखो I नोड की वैल्यू भी 1, I1 की वैल्यू भी 1, और यहां से E की वैल्यू भी 1, तो 1 1 1. तो यहां से आउटपुट क्या निकल रही थी हमारे पास, 1. लेकिन जब हमने NAND गेट यूज किया तो यहां से वैल्यू क्या रह रही है, 0. सो दिस इज द ओनली चेंज दैट यू कुड सी, दैट इफ वी मेक यूज ऑफ NAND gates to design a decoder, then the output will be at active low, and if we make use of AND gates, then the output will be at active high. So thanks for watching this video.